these two things are the different. When we do the psychoanalysis, right? The psychoanalysis means we are going far away in the developmental period of the child and trying to find out the conflict in the development period. What is the development period in the child? The from birth to 5 years is the developmental period where the psyche gets developed, or there could be a possibility of conflict according to the situation, background, environment, and the genetic background. Right? Though the psychiatric disorder comes on surface in the adulthood, might be the person suffered at the age of 24, at the age of 40, but if you see their seeds, the seeds lying in the childhood development, right? That we have to understand. That's why in homeopathy our case taking indicates the one of the method of psychoanalysis. What we are doing is the way of doing the psychoanalysis according to the psychiatry. Because what we do the retrospective study. We do the person from their childhood. We do the every epochs of the life, every stressors of the life. We're trying to find out whether the child or that person that person face with the conflict or the stress, and how that stress repercusses on the body or on the mind, right? So in the same way we have seen how the anxiety gets resurfaced. Now give you the example, the latest example. The last week, the one lady who is the 34 years old comes to me. Actually, she was coming to me because of her child who suffered with the severe urticaria, right? Which was managed beautifully with the homeopathic medicine, right? But when she seen the homeopathic result, because that child having the urticarial rash with severe intolerable itching all over her body, which was not managed with the pediatrician, not managed with the dermatologist, by even giving the prednisolone, that means steroids. The condition remains as it is, which was managed with the homeopathic medicine. तो उन्होंने ये देखा कि वह होम्योपैथिक मेडिसिन से भी क्विक रिलीफ मिलता है. जो स्टीरॉयड और डर्मेटोलॉजिस्ट पेडियाट्रिशियन ने मेडिसिन देके भी बच्ची को आराम नहीं मिला, तो उन्होंने भी दिखाया कि मुझे दिखाना है करके. तो लास्ट वीक उन्होंने दिखाया इन व्यू ऑफ पाइल्स, मतलब समथिंग देयर इज अ पेन एंड प्रोट्रूजन, दैट मींस देयर इज अ पाइल्स एंड फिशर, right? But when I took the case, I realized that, and even the intermittently her husband told me that कि her behavior is like this. मतलब अगर कहना ये है कि हस्बैंड का भी कहना था, मतलब इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द केस, कि ये दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज करती है और अपने बच्ची को भी कपड़े चेंज करवाने लगाती है. ट्राई टू सी, you can get the clue to enter into the point to explore the personality. Why this so? बराबर है. क्यों? कि मुझे लगता है कि डर्ट हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर मैं ऐसे चद्दर, मतलब घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, मेहमान तो छोड़ो, अगर बच्ची भी बिना नहाए अगर बेड पे बैठती है तो मैं तुरंत चद्दर चेंज कर देती हूँ. और कहीं पे भी मेरा हाथ का कहीं टच हो गया गलती से तो मैं हाथ धो लेती हूँ. सो इट वॉज अ frequent washing the hand, frequent changing the cloth. They don't bear the dirts, don't bear the anyone outside coming and sitting on her bed using her cloth like this. So all these things causes the severe tension. All these thing causes the severe tension in her, and compelling her to act according to that compelling her to act, that means compelling to change, to wash like this.
Now why? This is since these things occurs, these things going or increasing day by day, right? It is not since the childhood. When I ask about this, ki how it started, how it was started, because we need to understand the cause effect relationship, कि अगर ये इतना डिस्गस्ट, इतना क्लीनलीनेस है, क्लीनलीनेस चाहिए, वॉशिंग चाहिए, चेंज करना है, ये सब कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये whether it is since the childhood, might be there is a patient is very fastidious, so that she like the cleanliness. See, liking cleanliness and fastidious nature is different from the abnormality or the disorder. We have to mark or differentiate from normality to abnormality. Doing the things perfectly, wants everything neat and clean, don't like the dirtiness. But if the things repeated, and when it causes the distress in the daily life and performance, and unless and until if the person is not doing that thing, the tension and the distress build up and gets relief when that things done that things, राइट. दैट मीन्स कि उसको लगता है कि मतलब डर्टी है हाथ, डर्ट मतलब गंदे हो गए, हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया, गंदे हो जाएंगे, गंदापन हो जाएगा, मुंह में जाएगा तो बीमारी हो जाएंगी या और कुछ हो जाएगा. तो वो जो टेंशन बाउंड होता है या एंजाइटी बाउंड होता है, उसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एबनॉर्मल पर्सन में या डिसीज पर्सन में विच हैविंग द ओसीडी, which is not there in the normal person. And after some times again that tension bound and then again release, again create, again release. This is the way to that the OCD person behave. Now if you see the how this started, he uh, he narrate the story that when she was the 10th, she was at the 10th class, है ना. तो जब कॉलेज छूटा, है ना, पहले से बचपन से सी सच अ काइंड ऑफ person is quite anxious from the beginning, but anxious person, or we can say anxious disposition, not goes into the disorder that require to convert into the disorder. That person requires some triggering factor. Might be there is a soil in the form of strong family history of anxiety disorder, panic disorder, or OCD, right? But the triggering factor was at the when she was at the 10th क्लास. और कॉलेज छूटने के बाद क्या हुआ कि वो जिस ऑटो में बैठी, तो वो ऑटो में और दो बंदे बैठे जो कचरा चुनते थे. मतलब गंदगी, जैसे कचरा ये जैसे रहता है ना, साफ सफाई वाले जो झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं, है ना. तो गंदे कपड़े में उनके पास गंदा बैग था, मतलब वो थैली थी जिसमें कचरा, मतलब क्या था, और गंदे कपड़े थे. तो वो भी बैठे और ये पेशेंट भी बैठी, तो उनका उसको टच हो गया. और दैट कॉजेज द इंटेंस डिस्ट्रेस कि वो कि मुझे अभी क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, मेरे बॉडी में इन्फेक्शन चले जाएगा. और जैसे वो घर में गई, कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट बाथरूम में गई और पूरा काफी देर तक अपने बॉडी को क्लीन करते रही, काफी देर तक नहाते रही, बराबर, इन ऑर्डर टू क्लीन दैट. कि उसको वहीं पे कंफ्लिक्ट एक्टिवेट हो गया कि अभी बॉडी में इंफेक्शन गया, डर्ट गया, मुझे वो लोगों का कांटेक्ट हुआ, टच हुआ, बराबर. आफ्टर दैट दिस क्लीनलीनेस, दिस dirt, cleanliness, washing, changing, all these getting increased and amplified. Actually it start that the people observe कि this is the abnormal behavior of the that this person, बराबर है. तो this is the way that something is triggering and that cause the disease to come out, right?
right? So that we have to evaluate. This is not enough to understand just कि यहाँ से triggering है. We have to understand the childhood. Even we have to understand the background of family background. कि why this anxiety disorder or panic or OCD comes in this child, right? So you will get the some conflict, right? Now the common psychodynamic behind the anxiety symptoms or anxiety disorder, most important is the fixation at the immature level. That means at the when there is a psychosexual development is there up to 5 years, according to Sigmund Freud. This is the Freud theory, psychoanalysis of the person. He developed the 5 stages of psychosexual डेवलपमेंट और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के 5 स्टेजेस उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हम देखेंगे आगे. The adult who develop anxiety reaction always harbor unconscious conflict system that are powerfully valued and easily reactivated. Right? In other words, they are example of arrested development or of fixation or prematurely interrupted learning. Fixation early in the life. This fixation early in life at an immature level of functioning can result from variety of experience. मतलब ये fixation क्यों होता है? There are the different type of fixation like anal fixation, oral fixation, like this. We found that the infantile wish has been repeatedly aroused but consistently frustrated. मतलब बच्चों में जो इच्छाएं जागृत होती है वो इच्छाओं का दमन होता है, उस इच्छाओं को पूरा नहीं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है. तो when this occurs continuously there is a frustration, it has been denied satisfaction or the child has been treated or threatened with reprisal. और when the बच्चा अपनी जब इच्छा को जागरूक करता है, इच्छा को जाहिर करता है, तो पेरेंट्स उसको पनिशमेंट देते हैं. तो इच्छाएं गुप्त हो जाती है या सप्रेस हो जाती है या रिप्रेस हो जाती है. एंड दैट फॉर्म इफ इट ऑकर्स रिपीटेडली एंड दैट इंस्टिंक्ट, दैट मींस ईड. आई थिंक यू नो दिस ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, बिकॉज द इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है वहां पे ईड जो होता है, जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है ईड. देन आफ्टर 5 years or 3 years this ego develop and then super ego develop. This id is not like a egoistic, or ego is not like a egoistic. This id is a different id, ego and super ego. This is the development of psyche. बराबर है. तो ईड सेटिस्फाइड होना जरूरी. इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड फ्रस्ट्रेटेड और इट पनिश repeatedly, then it forms the fixation or it forms the conflict. Now the repercussion of the conflict will not immediately that the peoples or that person get surface. That this conflict then resurface or reactivated in the adulthood, in the adolescent or adulthood, right? Now another important point is that how the person goes into the anxiety disorder, right? The important psychodynamic behind it is the childhood experience with the parental model. Childhood experience with the parental model means how we define this. I think the screen is visible to all. Childhood experience with the parental model. अभी parental model मतलब क्या? Every child consider his or her parents as a ideal, right? Ideal person in the initial phase of the development of life or child. Children mostly adapt the pattern of behavior through the identification with the parents and mostly the anxious parents. Because if the parents is anxious,
If the parents is anxious, then they identify with that anxious parents and try to mimic, uh, and their anxiety is transferred to the that children. अभी कैसे ट्रांसफर होती है, ये एंजाइटी कैसे ट्रांसफर होती है? That result into the tantamount to a training in being anxious themselves. Children can be trained to be tense and anxious by parents who are not themselves especially anxious person. बराबर है, जो एंशियस नहीं है तो भी वो चिल्ड्रंस जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स को, या फिर ऐसा होता है कि जो ओवर एंशियस पेरेंट्स होते हैं, है ना, ओवर कॉशियस पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली उनको मना करते हैं, दे रिप्रीमांड्स, दे स्कोल्ड द चाइल्ड, देन डोंट डू दिस। कभी कभी आपने भी देखा होगा, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग्स we have to be, even we have to apply in your daily life or in the family, or we must guide to the other family members or the couple, right? कि हम जब भी जैसे हम अगर बच्चे को, हमको अगर मना करना रहता है तो हम देखिए, आप हम क्या करते हैं, अगर जाना नहीं, सीढ़ी से अगर जाने की कोशिश करता है नीचे, तो हम बोलते हैं कि वहां पे भूत बैठा है, हम बोलते हैं कि वहां पे चोर आ जाएगा, वहां अंधेरा है, वहां कुछ आएगा और आपको खा लेगा। दैट गिव्स द इंटेंस थ्रेट and tensions in the child mind, and this intense threat and tension remains, and it repercusses over the personality, right? And another is the overprotective parents. That means train, for example, they may train a small child to be habitually apprehensive by making sudden protective lunge and by giving continual warning of danger. मतलब वही ओवर प्रोटेक्टिव कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां पे ऐसा होता है, वहां वैसे होता है, मतलब हर बात पे अगेन दिस रिक्वायर्स द ट्रेनिंग। मतलब अगर आपने उसको उस समय वो चीज के लिए अगर डरा दिए, तो पेशेंट बिकम्स फ्राइटन्ड एंड द फियर रिमेन्स इन हिज पर्सनालिटी, दैट मे गिव्स राइज टू इन द लाइफ, may turns into the disorder in the form of anxiety disorder, generalized anxiety disorder, OCD, panic. But again, it requires the some strong inhibition or conflict, right? If this occurred, or sometimes it happened that conflict develop, may resolve in the initial period of the life itself by कुछ ऐसे बिहेवियर, पेरेंट्स ने अपने बिहेवियर चेंज कर दिया, या कोई ऐसा बंदा मिला है कि उनको अगर उसको अगर समझा दिया कि नहीं, ये यहाँ ऐसा नहीं रहता है, सब ठीक होता है, यहाँ कुछ ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, एंड दैट helps to resolve the conflict, then that will not repercuss in the negative form. This may happen. So we have to be very careful while doing these things, because everything that we behave, how we behave with the child remains in the unconscious or subconscious mind, and that reflect in the form of personality. Anxiety disorder have been found to develop in family in which the parent places the high expectation on their children, but then fail to acknowledge or even disparage their offspring accomplishment as a substandard. Again, this is very important to understand कि काफी हाई एक्सपेक्टेशन, बच्चे का आईक्यू इतना नहीं है, और उनको उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी बच्चों से कि उसको 99% मिले, 95% मिले, तुमको भी मिलना चाहिए, तुम करो करो करो, खिलो मत, ये मत करो, टीवी मत देखो, सब तरह तरीके से उसको बम्बार्डिंग होता है, उसके विश को सप्रेस किया जाता है। जो ईड होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है,
राइट, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ईगो डेवलपमेंट, बराबर। तो एक्सपेक्टेशन काफी है, और जो भी उसने गेन किया है बाय मेहनत से, जो भी उसने कमाया है, जो रिजल्ट मिला है या जो आउटकम निकला है, उसमें कभी भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना, बराबर है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसमें गलतियां निकालना, बराबर है कि नहीं, ऑल दिस। और बच्चों को वो क्रिटिकल वे से, वो क्रिटिसाइज कर से बात करना, दैट मीन्स दैट पेरेंट्स मोस्टली टॉक अबाउट द थिंग्स इन अ क्रिटिकल वे। तुमने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो बच्चा देखो उसने कैसा किया, बराबर है। ऑल दिस थिंग्स गिव्स राइज टू दिस चेंज इन द साइक, राइट, if it is repeatedly done, बराबर है कि नहीं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन एक्सप्लेन और टू अंडरस्टैंड दैट never compare our child or any child to someone whose IQ level is different from this child, right? So we have to understand this, because these things gives rise to a psychological problem or psychiatric problem, right? So this is the psychodynamic understanding of the anxiety disorder, ये हमने लिया था, right? So come to the case, I think panic disorder का ओरल और एनल फेज। अभी ओरल फेज जैसे ये बोलते हैं ना कि ओरल फिक्सेशन, मैंने बताया एक टर्म एनल फिक्सेशन, तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन द अर्ली एज ऑफ द लाइफ रहता है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, व्हाट दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिगमॉइड फ्राइड, because most of the peoples or in the history, if you see the Sigmund Freud was harshly criticized, but sometimes it is the thought process of Freud get become accepted. According to him, that when the child start from birth to 1.5 year to 2 years, they try to take a pleasure by breastfeeding. सो वो फीडिंग और सकिंग जो है या च्यूइंग जो है, दिस इज द वन वे टू ग्रेटिफाई हिज और हर इंस्टिंक्ट, दैट मीन्स ईड, बराबर। द ओरल स्टेज ऑकर फ्रॉम बर्थ अंटिल 2 year of age with the corresponding erogenous zone from the stage being the mouth। माउथ ये इंस्टिंक्ट रहता है जहां पे वो अपने डिजायर या प्लीजर को सेटिस्फाइड करता है बाय सकिंग और च्यूइंग, by sucking the breast or nipple, right? Now, this disruption in this oral stage of development, if there is a disruption, if they are not able to gratify himself or themselves by doing that things, then there could be a conflict occur or disruption in the oral stage of development. And that disruption leads to oral fixation. Now, it has been postulated that when the person having the oral fixation, then they can easily turn, or they will easily turn into the smoking like a habit. Why this so? Because smoking, keeping the cigarette in the between the lips, again gives to the pleasure to the oral or mouth. That means there is a reactivation of that stage, pleasure feeling or pleasure sensation that adult get. So if there is a disruption in the oral stage, that gives rise to a smoking as a habit, or any habit which gives the pleasure to the mouth or lips, right? वैसे ही एनल फिक्सेशन का है सेकंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, जो 1.5 साल से लेकर 3 साल तक होता है, वहां पे अगर प्रॉब्लम आया, बिकॉज अगेन द टॉयलेट ट्रेनिंग इज द सेकंड स्टेज, इज द इरोनियस एरिया, है ना, जैसे ओरल था, ये एनल एरिया है। वहां पे अगर कंफ्लिक्ट डेवलप हुआ तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ओसीडी टाइप, है ना। एनल फिक्सेशन से ओसीडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ईगो डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स ईड
कहीं तो सेटिस्फाइड होके ईगो आता है. ईगो मीन्स रियलिस्टिक mind. So hope you understood this thing, the psychodynamic, actual psychodynamic in the psychiatry. Excuse me, sir. हाँ. Sir, can you explain anal fixation a little bit? Okay. Anal stage. This anal stage start from the 15 month to up to 3 years. 15 month of the age in the psychosexual development age. The anal stage occurs with corresponding erroneous zone on the bowel and bladder control. मतलब in this stage toddlers learn how to toilet train. That means ये toilet training का age है, जहाँ पे लैट्रिन पेशाब कहाँ करना, कैसे करना, कहाँ इसको ये करना, यहाँ करना सही नहीं है, वहां करना चाहिए. बराबर है. तो ये कॉन्शियसली बच्चों में समझ आती है. नाउ दिस ओरल फेज जो होता है या ओरल स्टेज होता है, यहाँ पे बच्चों में समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है. बराबर है कि नहीं. वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को या ईड को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोरल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग. क्योंकि यहाँ पे ईगो डेवलप नहीं होता है, लेटर ऑन सुपर ईगो वो डेवलप नहीं होता है, यहाँ सिर्फ ईड होता है. तो ये जब एनल स्टेज आता है जहां पे टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, which means they understand how to control their bodies and continue their acceptance of delayed gratification. Now here the training where the person understand or that child understand कि अगर हमको defecation करना है तो हमको टॉयलेट में जाना है या प्रॉपर वे से कहाँ बैठना है. बराबर है कि नहीं. तो ही ट्राइंग टू डिले द ग्रेटिफिकेशन. यहाँ पे पहले क्या रहता था कि ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग कि ठीक है कुछ भी हो जाए, आगे पीछे क्या होने वाला पता नहीं. पर यहाँ पे कैसा है कि लैट्रिन या स्टूल या डेफिकेशन या अर्जिंग जब होता है, ही नोज और ही रियलाइज और ही लर्न और शी लर्न कि हमको कहाँ जाना है, बाथरूम में जाना है. So there could be a delayed in the gratification, and additionally the ego develop, helping the child with the delayed gratification by quelling the id impulsive desire. Right. मतलब जो डिजायर्स होती है, जो ईड होता है, जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट होता है, उसको थोड़ा बाजू में रख के दबा के या साइड में करके यहाँ पर ईगो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे वो रियलिटी को समझता है और वो बताता है कि हमको अगर टॉयलेट आया है या लैट्रिन आया है या अर्जिंग आया है तो हमको क्या करना है, कहाँ जाना है. तो दिस इज द anal stage. But the anal stage, this is the second stage of psychosexual development and associated erroneous pleasure. हाँ. Now Freud believed that difficult toilet training could have long-lasting effects on the personality. The child who is not able to train or goes under the toilet training, or they are not accepting that things, बराबर है. What happens, they becomes the effect of that remains lasting, and you may repercuss that effects over the adulthood or the adolescent age in the personality, and could lead to anal expulsive fixation and anal retentive fixation. That means might be some child may suffer or make that parents complaining of कि बोलते हैं ना कि बच्चे को लैट्रिन आती है तो भी छुप जाता है और रिटेन करके रखता है. Some child is not able to remove the stool, not able to defecate, not able to. Some child feels highly shy to defecate in front of the peoples or defecate in the toilet, or they defecate silently, secretively. This things or this condition you may know or you may see in your patient. So if this anal fixation occurs, this may reflect in the personality in the form of certain disorder like OCD, like anxiety disorder, or like this.